गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट क्लास में आपको बता रहा था एनालाइजर्स के बारे में, बैच एनालाइजर्स और रैंडम एक्सेस एनालाइजर्स। ये दोनों फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर्स की श्रेणी में आते हैं। आज हम पहले आपको बताएंगे बैच एनालाइजर्स के बारे में। द ऑटो एनालाइजर्स ऑफ दिस टाइप हैव बिकम आउटडेटेड। अब ये उपयोग में नहीं रहे। These analyzers perform only one type of a test at a time. There was a provision to accommodate only one type of a test or only one type of a reagent at one time. These analyzers were utilized by using following general procedure. After collecting all the samples, particularly blood, the respective serum or plasma were separated. Then various batches of the samples were made according to the determinations such as the analyte tests, glucose, urea, creatinine, protein, etc. Specific reagent was placed on the analyzer. Then the analyzer was programmed according to the number of specimens on the sampler and a specific code number was given for each test. The analyzer of batch type performed following functions such as pipetting of the reagent in specific cups or cuvettes, pipetting of the samples in the reagent, automatic mixing of the reagent and the sample, and incubation of the reaction mixture at a specific temperature. मतलब कि ये जो बैच एनालाइजर्स थे, इनमें सिर्फ हम एक ही प्रकार का टेस्ट एक वक्त में लगा सकते थे। यदि हमको ग्लूकोज लगाना है तो जितने भी सैंपल हमारे पास ग्लूकोज की टेस्टिंग के लिए थे, वो सैंपल हमको एक साथ ग्लूकोज के लगाने थे। यदि हमको बीच में क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल कोई भी टेस्ट चेंज करना पड़ता था तो अपनी मशीन को रीप्रोग्राम करना पड़ता था, जो कि काफी वक्त लेता था और हमारे रिएजेंट भी काफी बर्बाद होता था। इस वजह से ये धीरे धीरे से आउटडेट होते रहे, इसीलिए इनका नाम भी पड़ा था बैच एनालाइजर्स। अब ये ज्यादातर लैबों में उपयोग में नहीं आते हैं। हाँ, इसकी अच्छाई ये थी, a large number of sample batches could be tested accurately and precisely with appropriate quality control programs. उस वक्त की जो मशीन थी जो ज्यादातर यूज होती थी बैच एनालाइजर के रूप में, वो थी क्लिनिकॉन कंपनी की। कुछ इसकी एडवांटेजेस भी थी। These analyzers were not patient oriented and did not function according to the patient test. These analyzers were not equipped with stat facility or immediate reporting or emergency testing of the patient samples. These analyzers were not equipped with random access analysis. अब अगली प्रकार का ऑटो एनालाइजर जो आजकल प्रायः हर लैब में पाया जाता है, उसको हम जिस नाम से पुकारते हैं वो है रैंडम एक्सेस एनालाइजर। These analyzers perform all the functions of a batch analyzer, but in addition to that, they are also equipped with the random access mode. That is, completing all tests on one sample before proceeding to the next sample. ये होता है रैंडम एक्सेस मोड। जो भी मरीज की प्रोफाइल में टेस्ट जितने भी होने हैं, जब तक उस पर्टिकुलर मरीज के सारे टेस्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक दूसरे मरीज की तरफ मशीन नई टेस्ट लगाएगी। जब उस पेशेंट का पूरा प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा, उसी के बाद नेक्स्ट पेशेंट पर मशीन मूव ऑन करेगी। दूसरा था सैंपल ओरिएंटेशन मोड। Completing the greatest number of samples in the shortest period of time, that may be 120 to 800 samples per hour. और तीसरा था sequential mode, that is processing one test at a time. Compared to the batch analyzers, the random access analyzers were equipped with following additional facilities. जो एडिशनल फैसिलिटीज थी उनके बारे में हम जानेंगे।
वो थी क्यूवेट डिस्क विद टेम्परेचर कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक मल्टी-स्टेज क्लीनिंग सिस्टम, reagent table with capacity for single or double containers of the reagent, and also facility for low temperature, that is 8 to 15 degrees Celsius, to preserve the stability of the reagents. Next, level sensors for both samples and the reagents. Next, sample rack system, individual racks for samples, controls, calibrators, etc. Next point, barcode identification of samples and the reagents. Then facility for continuous loading of the samples, facility for auto dilution, plotting of daily and monthly QC charts, quality control charts, and also there was availability of ion selective electrodes, ISE technology. Next point, volume as low as 2 to 5 μl for the determination of sodium, potassium, fluoride, chloride ions, etc. and a capability to perform 2 to 3 reagent tests. 2 से 3 प्रकार के reagent कंपनियों के अलग अलग प्रकार के reagent हम एक ही टेस्ट के लिए हम इस मशीन पर लगा सकते थे. अब ये कार्य कैसे करता था? जो रैंडम एक्सेस एनालाइजर है वो कार्य कैसे करता है? कुछ इसकी बेसिक फंक्शनिंग स्टेप्स होती हैं. वो कंपोनेंट स्टेप इसकी होती है. पहली होती है स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन. अ बार कोडेड लेबल इज प्लेस्ड on the specimen container and it is read subsequently by one or more barcode readers that have been placed at key positions in the analytical pathway. The sample identification and information is then transferred to and processed by the system software. By using this method of specimen identification, the error rate is reduced to 1 in 300 characters or to about 10 in 1 million characters. गलती की संभावना कम से कम रहती है. By using barcoded information, identification at the patient's bedside was possible to a greater integrity. Next point was specimen preparation, handling and delivery. Adequate quantity of the blood is collected in vacutainer tubes and after proper centrifugation, the tubes are placed in the sample carousels. Since the specimen probe is equipped with level sensors, the required amount of serum can be pipetted automatically. The use of level sensors restricts the penetration of sample probes into the specimens, provides smooth motion and eliminates spatter. मशीन के अंदर जो छोटी छोटी एलिक्वेट ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर कुछ में कैप होती है और कुछ में जब वाइब्रेशन होगा मशीन के अंदर तो छलकने का कम से कम पॉसिबिलिटी रहेगी. Disposable specimen cups were used which were made up of glass or polyvinyl plastic. Their shapes are such that even without a cap, little evaporation occurs. The specimens are advanced into the analyzer at a uniform rate. एक के बाद एक मशीन जो भी हमने नंबरिंग की है, प्रोग्रामिंग की है, वो टेस्ट मशीन या ऑटो एनालाइजर अंदर ही अंदर लगाएगा. The design of the device for holding specimen is often specific. हर कंपनी का अपना carousel का शेप अलग हो सकता है. Cuboidal, cubical, 2 ml, 1 ml, depends on the company and the manufacturer. वो अलग वैरायटी का अलग अलग उसके वेरिएंट्स हो सकते हैं. It may be in the form of a tray, rack or a chain. The carryover between the specimens is reduced considerably by setting adequate wash stations.
अब अगले हिस्से के बारे में आएंगे। तो फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर के कंपोनेंट स्टेप्स का अगला हिस्सा है वो है रीडिंग, हैंडलिंग, स्टोरेज, identification and delivery. The liquid reagents stored in plastic or glass containers are used in most automated systems. Although for most of the test, single monostep method is used, but two or more reagents may be required for same tests. In large autoanalyzers such as Hitachi, the reagents are stored in separate compartments maintained at 4 to 10 degrees Celsius. The reagents are prepared manually or by automated reconstitution from dry tablet or powder and are stable after reconstitution for 2 to 8 days when stored at 4 to 8 degrees Celsius. The labels on the reagent container include information such as reagent identification, volume of the contents, expiry date, and lot number or batch number. Many reagent containers carry barcodes that contain most of this information. And when a barcode reader is coupled with the level sensing system of the reagent, then it alerts the operator about the quantity of the reagent in the container. जो भी अब मॉडर्न मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बारकोड लेवल के साथ ही जो अपने रिएजेंट कंटेनर्स होते हैं उसको करते हैं और जो सैंपल के वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं उनको भी हम बारकोडेड इंफॉर्मेशन के द्वारा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। और मशीन के अंदर लगा हुआ बारकोड रीडर चाहे वो सैंपल हो चाहे वो रिएजेंट कंटेनर हो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मशीन के डिस्प्ले मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देगा। वो रिएजेंट कब बना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसकी एक्सपायरी क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, उसके बारे में पूरी उसकी नॉर्मल लीनियर रेंज क्या है, नॉर्मल रेफरेंस रेंज क्या हो सकती है, बायोलॉजिकल रेफरेंस रेंज क्या होगी, वो सब पूरी इंफॉर्मेशन आपको बारकोड रीडर के द्वारा मशीन के डिस्प्ले पर मिल जाएगी। Liquids of the reagents are taken up and delivered to mixing and the reaction cups or the cuvettes by pumps, via tubes or by positive displacement syringe devices. इनको मशीन के अंदर लगा हुआ रोबोटिक आर्म चलाता है जो कि एस्पायरेशन या डिस्पेंसिंग का या ट्रांसफरिंग ऑफ द लिक्विड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर वो मशीन के अंदर ही करेगा और कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग इसमें रहती है। The syringe devices are commonly used in many automated systems for both reagent and sample delivery. The reagent probes are washed and pushed if more than one reagent is used to prevent reagent carryover. Next part जो हमारे fully automated analyzer का होता है mixing, incubating and reading. हमारे मशीन के अंदर हमारा रिएजेंट आ गया है, हमारा सीरम आ गया है और अब दोनों को मशीन के अंदर ही दोनों की मिक्सिंग या इंक्यूबेशन होना है। The mixing of the specimen and the reagent takes place in specific cells which are also used to mix reactants like in the thermocuvettes. Various techniques used to mix the reactants include forceful dispensing, magnetic stirring by using vibrating rods, rotating pedal or by the use of ultrasonic energy. For incubation, the analysis compartment is placed in a large water bath or air bath heated to about 30 to 37 degrees Celsius. The cuvettes are transparent in the spectrum. The use of disposable cuvettes eliminates carryover. The cuvettes are washed in alkaline solution and then rinsed by deionized water and dried by vacuum. अब मशीन के अगले हिस्से में चलेंगे
जो रैंडम एक्सेस एनालाइजर्स का अगला हिस्सा, कंपोनेंट स्टेप्स का अगला हिस्सा होता है, वो होती है उसकी मेजरमेंट डिवाइसेस. For the measurement of results, principles are used which are based on the following techniques: photometry or spectrophotometry, reflectance photometry, turbidimetry, nephelometry, ion selective electrode technology, or other electrode chemical techniques. अब हम बात करेंगे फोटोमेट्रिक और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक रीडिंग्स की. ये इसमें बेसिकली 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं. एक रेडिएंट एनर्जी सोर्स चाहिए हमको, एक उस रोशनी की किरण को फैलाने के लिए मींस ऑफ स्पेक्ट्रल आइसोलेशन चाहिए, और एक डिटेक्टर चाहिए. जो हमारा सैंपल क्यूवेट था, वो जो उसका रिएक्शन मिक्सचर अब हमारे पास बना हुआ है, उससे जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बल्ब से लाइट पास हुई तब कितनी हमारी फिल्टर्स पर गिरी है, वो मशीन का ओडी या एब्जॉर्बेंस के रूप में उस एनालाइट की कंसंट्रेशन हमको पता करनी है. द रेडिएंट एनर्जी सोर्सेज आर टंगस्टन, क्वार्ट्ज, हैलोजन, ड्यूटेरियम, मर्क्यूरी, नियॉन एंड लेजर सोर्सेज. ये बल्ब हैं जो मशीन के अंदर पाए जाएंगे. जितना हमारा बजट होगा, जिस हिसाब से हमारी लो बजट लैब है, मीडियम बजट लैब है, हाई बजट लैब है, उस हिसाब से मशीन परचेज कर सकते हैं जैसा हमारा बजट अलाउ करेगा, और उसी के अनुसार ये बल्ब्स उसमें स्पेक्ट्रोफोटो के अंदर मिलेंगे हमको, जो कि टंगस्टन, क्वार्ट्ज, हैलोजन, ड्यूटेरियम, मर्क्यूरी, नियॉन, या आजकल मॉडर्न एलसीडी या लेजर सोर्सेज वाले बल्ब्स भी मिलेंगे हमको. The spectral isolation is achieved with interference filters in several multi-test analyzers. The required filters are mounted on a filter wheel, and the appropriate filter is moved into the place under the command of a microprocessor. Monochromators with movable gratings and slits provide a continuous choice of wavelength. Photodiode and photomultiplier tubes are used in the detectors in most of the automated systems. For each measured analyte, the microprocessor chooses the appropriate pair of wavelengths. The readings are noted at 2 wavelengths, and this eliminates the interference due to hemolysis, turbidimetry, or high bilirubin concentration. A perpendicular light path is maintained through the reaction cells or the cuvettes by accurate alignment of the lenses. The reaction cells and the cuvettes are transported and passed through light beams in a uniform manner. In the case of reflectance photometry, diffused reflected light is measured. अगली मेथड थी इसकी मेजरमेंट डिवाइसेस की, turbidimetry or nephelometry. In the case of turbidimetry or nephelometry, the light transmitted by the turbidimetry or the turbidity by the reaction between the reagent and the serum sample is measured. These techniques are used for the determination of various proteins and antibodies in the sample. The composition of components incorporated into an automated analyzer is generally appropriate to the intended throughput precision and the range of wavelength and also the cost of the instrument. जितना अच्छा हमारा इंस्ट्रूमेंट का फिल्टर होगा, लाइट सोर्स होगा, उतनी सटीक रीडिंग हमको मिलेगी, उतनी अच्छी प्रिसीजन के साथ एक्यूरेट रीडिंग हमको मिलेगी. नेक्स्ट पॉइंट, आयन सेलेक्टिव मेथोडोलॉजी is also used by many automated analyzer systems for the determination of sodium, potassium, fluoride, chloride or lithium. Peristaltic pumps are used to move the sample into the chambers
containing fixed and reference electrode. The specimen remain in contact with the electrode for sufficiently long time, about 7 to 45 seconds, to reach a steady state condition. अब मशीन का अगला हिस्सा आता है, हमारे फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर सिस्टम्स का अगला हिस्सा आता है, जो होती है उसकी सिग्नल प्रोसेसिंग, हैंडलिंग ऑफ द डेटा एंड कंट्रोल ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर. The digital computers in automated system convert analog signals from the detectors to digital form by analog to digital converter inside the computer, and then processes the digital data by means of algorithms immediately into useful output. Apart from this, the microprocessor also performs various functions such as all electromechanical operations are performed uniformly, repeatedly, and in a corrected sequence. These include transfer of the solution, placement of proper filter for bichromatic or multichromatic readings, regulation of change of speed of the rotation of the carousel. In addition to this function, the microprocessor also controls the functions such as result calculations and result reporting by means of digital display and by printing. The microprocessor acquire, process, access and store the operational data from the analyzer, and they also react to improper functions by recording the right nature of the main function. यदि मशीन के अंदर कोई गलती होती है तो भी जो मशीन के अंदर लगा हुआ माइक्रो प्रोसेसर है वो हमको अलर्ट कर देगा, चाहे वो आइकन के द्वारा हो या मशीन के डिजिटल डिस्प्ले पर वो डिस्प्ले हो जाएगा क्या गलती मशीन के किस पार्ट में किस हिस्से में आ रही है और उसको ठीक क्या करना है, उसकी रेमेडी भी वो ऑटोलाइजर सिस्टम की सॉफ्टवेयर हमको बता देगी. The output data tested against preset criteria can be flagged and displayed for the operator's evaluation and judgment, and such information specifies that the linearity of the reaction is maintained, the absorbance of the end product is very high or is very low, तब भी मशीन हमको ये अलर्ट सिग्नल देगी. The microprocessors can take command from the operator through the keyboards of touch sensitive screen. जैसा कि हमने बताया लो बजट लैब, मीडियम बजट लैब या हाई बजट लैब होगी, तो जैसे मोबाइल फोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, टच स्क्रीन होती है, लो बजट फोन्स में इतना नहीं होता है, वैसे हमारे ऑटो एनालाइजर सिस्टम्स में भी ये सिस्टम है. लो बजट की मशीन होगी तो उसमें टच स्क्रीन नहीं होगी, थोड़े अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अच्छी लैब वाली होगी तो वहां पर टच स्क्रीन भी उसमें अवेलेबिलिटी होगी. अब हम बात करते हैं कुछ अलग से ऑटो एनालाइजर टाइप्स की. इसमें सबसे पहले आता है ऑटो एनालाइजर्स बेस्ड ऑन इम्यूनोएसे टेक्निक्स. इसमें जो सबसे ज्यादा मेथड यूज होता है वो होता है माइक्रो पार्टिकल एंजाइम इम्यूनोएसे, MEIA टेक्निक, माइक्रो पार्टिकल एंजाइम इम्यूनोएसे टेक्निक. पहले जानते हैं इसके बारे में क्या है. जो ज्यादातर एनालाइजर प्राय लैब में पाया जाता है मिनीविडास जो एनालाइजर होता है, जिसमें आप हार्मोन्स की, ट्यूमर कैंसर मार्कर्स वगैरह की टेस्टिंग कर सकते हैं, वो इस पर बेस्ड होता है. वो टेक्निक होती है माइक्रो पार्टिकल एंजाइम इम्यूनोएसे. The microparticle enzyme immunoassay technology uses the solution of suspended sub-micron sized latex particles to measure the analytes. The particles are coated with a capture molecule specific for the analyte being measured. The steps of the sequences of microparticle enzyme immunoassay are
The samples, microparticles and the conjugate are combined in the incubation well of the reaction vessel, and during the incubation period the analytes bind to the microparticle, creating an immune complex. The processing pipette aspirates the reaction mixture from the incubation well of the reaction vessel and dispenses it into the matrix cells. The immune complex binds irreversibly to the glass fiber matrix. Next point, a matrix cell removes unbound material after a wash. The immune complex is restained by the glass fibers while the excess reaction mixture flows rapidly through the large pores in the matrix. The processing probe transfers alkaline phosphatase labeled conjugate from the reagent well into the reaction vessel to the matrix cell. The conjugate binds to the immune complex to complete the antibody analyte conjugate sandwich, and then the matrix is washed again. Now the dispenser adds 4-methyl umbelliferyl phosphate to the matrix cell. The alkaline phosphatase catalyzes the hydrolysis of umbelliferyl phosphate to 4-methyl umbelliferone, and the rate of this methyl umbelliferone generation is proportional to the analyte concentration and is measured by microparticle enzyme immunoassay technology. जो एनालाइजर इस पर बेस्ड होता है उसके बारे में आपको बताते हैं. The mini Vidas analyzer. This is a semi-auto analyzer which performs determination of hormones, tumor markers, hepatitis markers, HIV antibodies by enzyme immunoassays based on chemiluminescence technique or enzyme linked fluorescent assay. The hardware system of the mini Vidas contains a space to insert 12 reagent strips. 12 खानों में हम 12 प्रकार के टेस्ट की reagent strips हम लगा सकते हैं जो fully barcoded लेबल पर होती हैं. It is possible to run a maximum of different 12 tests simultaneously. One reaction reagent well contains the information on its strip label reader or lot data cards. The mechanical system inside the mini Vidas analyzer processes the tests as addition of enzyme labeled antigen, then incubation of up to 40 minutes, then washing to free the antigen, and then addition to the substrate. The various reactions takes place in the different wells, and the final color producing reaction takes place in the last well made up of quartz. The upper portion of the mini Vidas analyzer contains a solid phase receptacle compartment. The 6 positions of the block correspond to the 6 positions in the reagent strip tray. The solid phase receptacle contains antibodies, and the incubation system is there to maintain all components at required temperature. A CPU is there, central processing unit is there to control the entire system. A keyboard, a screen printer is there to enter the patient assay data on the Vidas terminal to create the patient profile or the work list. When the assay is complete, the results are automatically calculated by the mini Vidas, stored in the memory, and the results can be displayed on the screen or in a printout manner. अब हम आपको बताते हैं एक और मशीन जो कि माइक्रो पार्टिकल एंजाइम इम्यूनोएसे पर बेस्ड होती है, उसको हम कहते हैं
Immunoassay Automated System. The Immunoassay Automated System is a benchtop random access immunoassay analyzer built around a test unit. The Immunoassay system is designed to perform chemiluminescence immunoassays. The basic working system of this analyzer is the antibody coated beads are held captive within the bar-coded test unit, which serves as a reaction vessel for all incubation. The specimen in the bar-coded carrier is retransferred by specific automatic probes to the test sample. After incubation of the sample with alkaline phosphatase, the labeled substrate is there for 30 to 60 minutes. The test unit is shuffled to spin the wash rotation. Rapid separation and efficient washing of the beads and the test unit are achieved by spinning the tube at high speed. Here, separation of the bound and the free takes place. The fluid contents are instantly transferred to a soak chamber which is integrated in the test unit. The substrate is then added and the test unit are transferred to the luminometer which is placed inside the machine, and the intensity of the light emission from the chemiluminescent substrate is proportional to the amount of the analyte originally present in the sample. तो ये भी एक प्रकार का ऑटो एनालाइजर था जो कि हमारी माइक्रो पार्टिकल एंजाइम इम्यूनोएसे टेक्नोलॉजी पर आधारित था, मिनी विडास, और दूसरा ये था हमारा इम्यूलाइट ऑटोमेटेड सिस्टम। अब हम बात करते हैं बायोचिप्स की। ये थोड़ा सा लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ऑटोमेशन लेबोरेटरीज में है, जो प्रायः नई प्रकार की लैब्स आप पाएंगे, वहां पर ये बायोचिप्स के आधारित मशीनें आपको मिल सकती हैं। A biochip is a collection of miniaturized test sites on microarrays arranged on a solid substrate that permits many tests to be performed at the same time in order to achieve higher output and speed. अभी बायोचिप्स की शुरुआत कहां से हुई थी, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में। The development of the biochips has a long history, starting with the early work on sensor technology. One of the first portable chemistry-based sensors was the glass Ph Electrodes invented in 1972 by Th Hughes. The measurement of the pH was accomplished by detecting the potential difference developed across a thin glass membrane selective to the permeation of hydrogen ions, and this selectivity was achieved by the exchange between the hydrogen ions and the silicon oxygen sides in the glass. In 1956, Leland Clark published a paper on oxygen sensing technology. This device became the basis for the glucose sensor developed in 1962 by Clark and Lyons, which utilizes glucose oxidase molecules embedded in a dialysis chamber. The enzyme functions in the presence of glucose to decrease the amount of the oxygen available to the oxygen electrode and thereby relating the oxygen level to the glucose concentration. Then, in the following years, Watson and Crick announced their discovery of the double helix structure of the DNA molecules and set the stage for genetic research that continues till the present day. The development of sequence technique in 1977 by Gilbert and Sanger enabled researchers to directly read the genetic codes that provide instructions on protein synthesis. इसी में कार्य आगे बढ़ता गया और इसके बाद डिस्कवरी हुई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन्वेंट किया गया कैरी मीलियस के द्वारा,
Carimulus invented the polymerase chain reaction (PCR), a method for amplifying the DNA concentration. This discovery made possible the detection for extremely small quantities of DNA in the sample. In the following years, in the 1990s, Hood and co-workers devised a method to label the DNA molecules with fluorescent tags instead of radio labels, and thus enabling hybridization experiments to be observed optically. The rapid technological advances of biochemistry and the semiconductor fields in the 1980s led to the large-scale development of biochips in the 1990s. 1980 के दशक में इसके बारे में काफी खोजें हुई और 1990 के दशक में ये धीरे धीरे से मार्केट में आने लगा. ऑटोलाइजर्स पद्धति के रूप में ये धीरे धीरे से अडॉप्ट किया जाने लगा. At this time, it became clear that biochips were largely a platform technology which consisted of several but separate integrated components. Today, a large variety of biochip technologies are either in development or being commercialized. नए जो ऑटोलाइजर्स आ रहे हैं उनमें बायोचिप इनकॉर्पोरेटेड रहती है. आने वाले समय में हाँ ये थोड़े से कॉस्टली जरूर होते हैं लेकिन इनकी रीडिंग बहुत ही क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम के हिसाब से बहुत ही रीडिंग सटीक आती है, प्रिसाइज या एक्यूरेट रीडिंग हमको मिलती है. न्यूमेरिकल एडवांसमेंट्स continue to be made in the sensing research that enables new platforms to be developed for newer applications. Today, cancer diagnosis through DNA typing is just a new market opportunity. DNA, RNA, proteins and even living cells are being employed for sensing mediators on these biochips. चलिए बच्चों फिर इसके बारे में अगली क्लास में बताएंगे. थैंक यू.